बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द चैप्टर इम्यूनोलॉजी। ये चैप्टर MSN पैथोफिजियोलॉजी और जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं इन सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सबका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन MSN में कुछ और भी डिजीज़ और डिसऑर्डर है जो आगे एक्सप्लेन हुई हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ बेसिक इम्यूनोलॉजी को स्लाइड्स देखेंगे। व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी? इम्यून सिस्टम की स्टडी करना, दिस इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर बॉडी, जो हमारा जिस्म फॉरेन पार्टिकल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। डिफिनेशन पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ आवर प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स आर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म एंड अदर रिस्पॉन्सेज टू दैम। होस्ट बॉडी होता है। फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल या एंटीजन, ये जो वायरस, प्रोटीन या वर्म्स, पैरासाइट्स है, एवरीथिंग दैट शुड नॉट बी इन माय माइंड इज कॉल्ड फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल। और उस पर एंटीजन होता है जो बॉडी के सेल्स उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको किल कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इसकी स्टडी करेंगे तो इम्यूनोलॉजी है। What is immune system for? Protect against the pathogen, eliminate damaged or malignant cells। तो इसी से आपको डिफिनेशन क्लियर होगा। रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम इज़ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस, इन्फ्लुएंजा या पोलियो, माइलहाइटिस से, टिपवर्म से, मलेरिया, हेलिमेंथस से, बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस से, एंड स्ट्रेप्टोकोकाई से, फंगाई से, कैंडिडिया एल्बिकन से। जितने भी वायरस हैं, पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, इम्यून सिस्टम अपने आप को, अपनी बॉडी को थ्रू द इम्यून सेल्स अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है। दिस इज़ द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। उसूल, principal functions of the immune system: to protect human from the pathogenic microorganism 1. Number 2, pathogenic microorganism, pathogen microorganism capable of causing infection and disease। microorganism वो होते हैं जो बॉडी में इन्फेक्शन काज करता है, डिजीज़ काज करता है। इन्फेक्शन, एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू इंटर होस्ट, मल्टीप्लाई एंड स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। इन्फेक्शन का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कोई पैथोजन जाए और वहाँ की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, तो वो हमारे साथ इन्फेक्शन है। डिजीज़, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन की वजह से कोई साइन एंड सिम्टम बॉडी में ज़ाहिर हो तो ये डिजीज़ शामिल होता है। जनरल इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी टर्म फ्रॉम एल इम्यूनस एक्सेप्ट ENG प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। इसका मतलब ये है कि बीमारी से हिफाजत। प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन इन द हायर ऑर्गेनिज्म टू rid the body of foreign particles, microbial and otherwise, and abnormal cells। Our immune system involve the interplay between our non-specific and our specific immune response। हमारी बॉडी में 2 टाइप ऑफ रिस्पॉन्स है, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटीज़ collectively refer to as our innate immunity। Specific immunities are referred to as our adaptive immunity, for which there are 2 branches: humoral immunity and cell-mediated immunity। Subjects in immunology: cell-mediated host defense functions, antibody-related defense mechanism, hypersensitivity reaction include allergy, autoimmunity, immunodeficiency and transplantation। डिवीजन ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के कुछ डिवीजन हैं: एडेप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, इन्फेक्टियस डिजीज़, डेवलपमेंटल इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोडिफिशियंसी, ऑटो इम्यूनिटी, कैंसर इम्यूनोलॉजी या ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी। अच्छा, डिफिनेशन। व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम सेल्स, टिश्यू एंड मॉलिक्यूल्स दैट मीडिएट रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। ये डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि इन्फेक्शन के लिए बॉडी का रेजिस्टेंस पेश करना, दिस इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट टू द पैथोजन एंड देयर टॉक्सिक इफेक्ट्स। अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाए तो वो आपके लिए टॉक्सिक है और बॉडी उसको क्या करे, उसके लिए रेजिस्टेंस पेश करे, उसको किल कर दे, तो दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यून रिस्पॉन्स, कलेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू द introduction of the foreign substance in an individual mediated by the cells and molecules of the immune system। Types of immunity: inborn and innate immunity। इसका मतलब ये है कि बर्थ अगर
बेबी की बर्थ हो जाए तो उसके थ्रू भी यही इम्यूनिटी शामिल होगी। इट इज़ द प्रेजेंट एट द बर्थ, इट इज़ आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है वो लाइफ के थ्रू बॉडी में बन जाती है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट एट बर्थ बट बिकम पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम एज लिम्फोइड सिस्टम डेवलप। 1970 WHO डिफाइंड इम्यूनिटी एज इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन। इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन, मैंने बता दिया जितनी भी फॉरेन बॉडी के अंदर जाते हैं वायरस और बैक्टीरिया, उसके थ्रू कोई एंटीजन होता है जिसके थ्रू बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता चलता है। फॉरेन बॉडी इन फॉर्म ऑफ, तो ये या तो ह्यूमरल होगा या सेलुलर होगा। ह्यूमरल में एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट होता है और सेलुलर में बाई एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी होते हैं। नॉन स्पेसिफिक में वन स्पेशीज, टू रेशियल एंड वन 3 इंडिविजुअल, और स्पेसिफिक में स्पेशल, रेशियल एंड 3 इंडिविजुअल। इम्यून सिस्टम में वायरस भी अटैक करता है, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, टॉक्सन्स, पोल्यूशंस। Two types of immunity: innate, non-adaptive immunity. First line of immune response relies on mechanism that exist before infection. तो ये इनेट जो होता है ये बाय बर्थ होता है और ये हर किस्म की बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंस पेश करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सेकेंड लाइन ऑफ रिस्पॉन्स इफ इनेट फेल relies on mechanism that adapt after infection, handled by T and B lymphocyte। ये टी और बी लिम्फोसाइट ये इम्यून सेल्स हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में वर्क करता है। वन सेल डिटरमाइंस एन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। Distinctions between innate and adaptive immune response. Innate immunity is non-adaptive and helps to initiate adaptive immune response. First line of defense but limited. Immediate was 0 to 4 hours. Adaptive immunity provides a more universal line of defense and has long-lived memory to provide protections upon reinfection. Adaptive immunity जो होता है वो strong immunity है, जबकि innate immunity फॉर एग्जांपल आपका स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू तो बैक्टीरिया चला जाता है जब इसमें ब्रेक आता है, और जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी इसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो बैक्टीरिया पर डायरेक्ट क्या करता है, किल करता है। तो provide protection upon reinfection. Second line of defense, generation of EG specific effector cells early 4 to 94 hours में या late greater than 94 hours. Immunology overview: lymphocytes, antigen presenting cells या effector cells. Responses: the innate immune response, capturing and displaying antigen, cell mediated immunity, humoral immunity, immunologic memory. Evolution of immunity: non-specific innate immunity and specific delayed onset acquired immunity. Acquired immunity के two types हैं, humoral immune response and cellular immune response. Humoral में antibodies की production करता है, वो B cells करता है, और cellular में T cells activation होता है. Defense mechanism of the human host. डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन होस्ट: इनिएट मैकेनिज्म, इनिएट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो नॉन स्पेसिफिक है। एडेप्टिव मैकेनिज्म इम्यूनिटी में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड हाईली स्पेसिफिक विद मेमोरी, और ये दोबारा जब वही एंटीबॉडी या पैरासाइट बॉडी में आएगा तो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी दोबारा उसको किल कर देता है। कोऑपरेशन बिटवीन द मैकेनिज्म: ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, बोन मेरो एंड थाइमस और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जो मैच्योरेशन साइट है। Secondary lymphoid organ, spleen, lymph nodes, MALT, mucosal associated lymph tissue, and GALT, gut associated lymph tissue. Trip antigen, EPC, lymphocytes and proliferation. Origin of cells of the immune system: derived from the common progenitor cells in the bone marrow, pluripotent hematopoietic stem cells, progenitor stem cells, erythroid lineage, erythrocytes and megakaryocytes. प्रोजेनरेटर स्टीम सेल्स हमारे साथ एरिथ्रॉइड लाइनेज हैं जो एरिथ्रोसाइट्स एंड मेगोकैरियोसाइट्स को, एंड माइलॉइड लाइनेज मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल्स, PMN एंड मास्ट सेल्स को ओरिजिनेशन होता है। लिम्फॉइड लाइनेज स्मॉल एंड लार्ज लिम्फोसाइट्स की
प्रोडक्शन करता है। ह्यूमन लिम्फोइड्स ऑर्गन, सर्विकल लिम्फ नोड्स, राइट लिम्फेटिक डक्ट, थाइमस, thoracic duct, cistern cheli, lumbar lymph nodes, lymphations of the lower limb, tonsils, lymphatic of upper limb, thoracic lymphatic duct, axillary lymph node, lymphatic of mammillary gland, spleen, mucus associated lymph tissue, MALT, pelvic lymph nodes, inguinal lymph nodes. This is our all lymphoid organs. The immune system, innate and adaptive. Innate non-specific immunity, anatomic barrier, skin, mucous membrane, physiological barrier, temperature, pH, phagocytic barrier, cells that eat invader. Inflammatory barrier, redness, swelling, heat and pain is called inflammation. जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या फेगोसाइटिक बैरियर करेगा या फिजियोलॉजिकल बैरियर करेगा पीएच या टेम्परेचर की वजह से। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो एंटीजन स्पेसिफिसिटी करता है, डाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी या सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन करेगा। लिम्फ नोड्स, एडिनॉइड, टॉन्सल, cervical lymph node, right lymphatic duct, right subclavian vein, axillary lymph node, bone marrow, lymphatic of mammillary gland, cisterna cheli, inguinal lymph node, left subclavian vein, thymus, thoracic duct, spleen, mesenteric lymph node. अच्छा, central immune organs. Central immune organ are the site of generation, differentiation and maturation of immunocytes, bone marrow, thymus, bursa of fabrica, the site of B cells maturation in birds, but absent in human. Innate immunity, non-specific host defenses that exist prior to exposure to an antigen, involves the following component: anatomic, physiologic, phagocytic and inflammatory. इनेट इम्यूनिटी में ये एनाटॉमिक, फिजियोलॉजिक और फेगोसाइटिक इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट हैं जो ये इन्वॉल्व हैं, जो इस आर डिफेंसिव हैं पैथोजन के लिए। एथेरोस्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेप्सिस, एलर्जी, कैंसर, डायबिटीज, ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस, अस्थमा एंड COPD और इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। बैरियर टू एंटीजेनिक इंसल्ट, एनाटॉमिक, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, फिजियोलॉजिक, टेम्परेचर, पीएच एंड केमिकल मीडिएटर, ये भी पैथोजन के लिए एक बैरियर है ना। तो ये बैरियर इसमें आता है, फर्स्ट में इनिएट में आता है। तो इनिएट इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएटेड बाय फेगोसाइट्स, natural killer cells and soluble proteins. Phagocytes, cells specialized in the process of phagocytosis. Macrophages resides in tissue and recruit neutrophils. Neutrophils enter infected tissue in large membranes, recognize common molecules of bacteria cells surface using a few surface receptors. Phagocytosis, capture, engulfment and breakdown of bacterial pathogen. Important component of innate immunity, factors that limit growth of microorganisms within the body: natural killer cells, neutrophils, macrophages and dendritic cells. Interferon या complement system, transferrin and lactoferrin, fever, inflammatory response, EPOBEC3G, amyloprotein in RNA, editing enzymes, kill virus infected cells, ingest and destroy microbes, and present antigen to helper T cells, inhibit viral replication. C3b is an opsonine membrane attack complex, creates holes in bacterial membranes, sequesters iron required for bacterial growth, elevated temperature retard bacterial growth, limits spread of microbes, causes hypermutations in retroviral DNA and messenger RNA. Main component of innate and acquired immunity that contribute to humoral antibody mediated immunity and cell mediated immunity. Innate humoral immunity में complement neutrophils
और मैक्रोफेज एंड नेचुरल किलर सेल्स जिस सेल मीडिएटेड में आते हैं। एक्वायर्ड में बी सेल्स और टी सेल्स, बी सेल एंटीबॉडी एंड हेल्पर टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये सेल मीडिएटेड में आते हैं। मेजर फंक्शंस ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स। Antibody mediated immunity, B cells host defense against infection or opsonize bacteria, neutralize toxins and viruses, allergy, hypersensitivity, e.g. high fever and anaphylactic shock, and autoimmunity, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड में आते हैं। और सेल मीडिएटेड में होस्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस स्पेशली एम ट्यूबरक्लोसिस, एलर्जी, hypersensitivity, poison and graft and tumor rejections, regulations of antibody responses, help and suppression. Cellular and inflammatory components of innate immunity. Cellular phagocytic cells, inflammatory vasodilations and capillary permeability. Cells of innate and adaptive immunity, myeloid lineage, neutrophils, principles of phagocytic cells of innate immunity, eosinophils, principles defender against parasites, basophils function similar to eosinophils and mast cells, referred to as polyforms, nuclear या leukocytes. Nuclei are multibads 2 to 5 and granulocytes, cytoplasmic granule. Cells of innate and adaptive immunity, myeloid lineage, monocytes, leukocytes with bean-shaped or brain-like convoluted nuclei, circulate in blood with half-life of 8 hours, precursors of tissue macrophages, mononuclear phagocytic cells in tissue derived from blood monocytes, participate in innate and adaptive immunity. Myeloid lineage, dendritic cells with dendriform star-shaped morphology, interdigiting reticular cells, capture and present antigens to T lymphocyte mast cell, located in mucous membrane and connective tissue throughout body. Major effector cell in allergy, modulations of initial immune response. Lymphoid lineage, large lymphocytes, large granular lymphocytes, natural killer cells, CD16, CD56, innate immunity towards viruses and other intracellular pathogens, participates in antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. Small lymphocytes, B cells, CD19, T cells, CD3, CD4, and CD8. Adaptive immunity, lymphocytes refer to small lymphocytes. The cluster of differentiation, a protocol for identification and investigation of cell surface molecule. CD, cluster of differentiation, number assigned on basis of one cell surface molecule recognized by two specific monoclonal antibody. Cluster difference nomenclature established in 1982, first international workshop and conference on human leukocytes differentiation antigen HLDA. CD marker cluster differentiation marker on leukocytes, granulocytes CD45, CD15, monocyte CD45, T lymphocytes and CD14, T lymphocytes CD45 and CD3, T helper lymphocytes CD45, CD3, CD4, T cytotoxic lymphocytes CD45, CD3, CD8, B lymphocytes CD45, CD19, natural killer cells CD45, 16 and 56 and CD3. Physiological mediator of innate immunity, chemical mediator, enzymes, interferon, complement, three pathway, classical, MB-lactin and alternative. Physiologic mediators of innate immunity, chemical mediator, collections, tool like receptors and acute phase protein. Mechanism of immunity. Epithelial surface, skin and epithelial surface cover the body and protects the individual. Healthy skin poses bactericidal influence. Salt, drying, sweet, long fatty acids, wet hand and predisposes to
mycotic and polygenic infections. Dynamic of phagocytosis. Bacteria become attached to membrane evaginations called pseudopodia. Bacteria is ingested forming phagosomes. Phagosome fuses with the lysosome. Lysosomal enzymes digest captured material. Digestion's products are released from cells. Comparison of adaptive and innate immunity. रिस्पॉन्स टाइम आवर्स इनिएट आवर्स में होता है, एडेप्टिव डेज में स्पेसिफिसिटी लिमिटेड एंड फिक्स्ड, ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता, जबकि एडेप्टिव हाईली डाइवर्स इम्प्रूव्स the course of immune response to repeat infections identical to primary response, much more rapid than primary response. वाइट ब्लड सेल्स डेवलपमेंट, स्टीम सेल से न्यूट्रोफिल बनता है, मोनोसाइट बनता है, इसिनोफिल एंड बेसोफिल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स बनते हैं, टी सेल से प्लाज्मा सेल बनता है और मोनोसाइट से मैक्रोफेज बनता है. Lymphocytes, lymphoid tissues and organ. Lymphocytes originate in bone marrow, lymphoid tissue and organ. Primary development and maturation of lymphocytes, bone marrow B cells and thymus gland में T cells की maturation होती है. Secondary mature lymphocytes meet pathogen. Spleen, adenoids, tonsils and appendix lymph nodes and Peyer's patches and mucosa associated lymphoid tissue. Lymph fluid and cells in lymphatic vessels. Lymphatic vessels collect and return interstitial fluid to blood. Transport immune cells throughout the body. Transport lipid from intestine to blood. Lymph nodes, kidney-shaped organ at a interval along lymphatic vessels, other secondary lymphatic tissues and organs. Adenoid tonsil, this is the lymphatic organs. Secondary lymphoid tissue associated with mucous membrane, primary portals of entry for pathogens, respiratory tract या gastrointestinal system के through enter होता है. Secondary lymphoid tissue, bronchial associated lymphoid tissue BALT, gut associated lymphoid tissue GALT, tonsils, adenoids, appendix and Peyer's patches. Pathogens are directly transformed across mucosa by M cells. Innate immunity या mechanism. Mechanical barrier surface mechanism, skin acidic pH in stomach cilia, तो ये हमारे साथ मैकेनिकल बैरियर है. इम्यूरल मैकेनिज्म के लाइसोसोम्स या बेसिक प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट या इंटरफेरॉन के थ्रू, दिस इज द ह्यूमरल मैकेनिज्म के थ्रू हम किल करते हैं. सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म में नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स आते हैं जो बैक्टीरिया को किल करता है. एडेप्टिव इम्यूनिटी, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बेस्ड अपॉन रेजिस्टेंस एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ, relies on genetic events and cellular growth, respond more slowly over the few days in specific. Each cell responds to a single epitope on an antigen has an amnestic memory. Repeated exposure leads to faster, stronger response, leads to clonal expansion. Adaptive immunity mechanism, cell-mediated immune response. T lymphocytes eliminate intracellular microbes that survive within the phagocytes or other infected cells. Humoral immune response. B lymphocytes mediated by antibodies eliminate extracellular microbes and their toxins. Cell-mediated immune response. T cells recognize peptide antigen on macrophage and associated with major histocompatibility complex MHC. A class identifies molecules on cell surface, helps the body distinguish self from non-self. T cells goes into effector cells stage that is able to kill infected cells. Cell-mediated immune response, primary response, productions of specific clone of effector T cells and memory cells developed in several days does not limit the infection. Secondary response, more pronounced, faster, and more effective at limiting the infection. Cytotoxic reactions against intracellular parasites, delayed hypersensitivity, tuberculin test, and allograft rejection. Humoral immune response. B lymphocytes recognize specific antigen, proliferate and differentiate into antibodies secreting plasma cells. Antibody binds to specific antigen on microbes, destroy microbes via specific mechanism. Some B lymphocytes evolve into the resting state memory cells.
Antibody immunoglobulin belong to the gamma globulin factor of serum proteins. Y-shaped or T-shaped polypeptides, two identical heavy chain, two identical light chain. All immunoglobulin are not antibodies. Five kinds of antibody: IgG, M, A, D, and E. On the pink color is variable region and the bluish color is the constant region. Acute phase proteins do play a great role in immunity. Infection and injury produces acute phase proteins. C-reactive protein CRP. Main in binding protein CRP activate alternative pathway, increase host defenses, prevent tissue injury, repair inflamed lesion. Natural killer cells: leukocytes, white blood cells, agranular and granular. Agranular lymphocytes 20 to 45, 25%, monocyte 3 to 8%. lymphocytes में T cells, B cell और natural killer cells आते हैं. Granular में basophils 5 to 10%, neutrophils 60 to 70%, eosinophil 2 to 6%. This is our leukocytes. Role of natural killer cells. Natural killer cells, NK cells, are a type of cytotoxic lymphocytes that constitute a major component of the innate immune system. Natural killer cells play a major role in the rejections of tumors and cells infected by viruses. The cells kill by releasing small cytoplasmic granules of proteins called perforin and enzymes that cause the target cells to die by apoptosis. This is the end of our immune system.